बारिश भी है ना। बेटा कैसे रहा आपका एग्जाम? क्यों हार्ड गया? वाह, पूरा साइंस हार्ड गया। क्यों बेटा? इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में और ज्यादा टॉपिक्स पे फोकस टीचर से बोला था और क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर पेपर है प्लस and what about this one? Okay, showing clearly. हाँ बट द नॉट यस So in the future, डायरेक्टली पीडीएम और रैंडम in between they will show during your science period. So which was the difficult part in that? This topic was नो only chapter 1 yes. कौन सा वाला? मैटर अराउंड अस थोड़ा ऐसा complicated type का ही topic है. It's not so simple. थोड़ा उसका study ज़्यादा करना पड़ा है. अच्छा नहीं, overall it was not. कितना मिलेगा? What is your expectation? और फिर अब छोटा नेक्स्ट एग्जाम आएगा उसमें दिस फर्स्ट टॉपिक, सेकंड वाला एंड थर्ड ऐसा रहेगा. और शायद नहीं आएगा तो फिर ये वाला आएगा एटम्स एंड मोल. ये सेकंड है नहीं, दिस इज थर्ड. मैटर अराउंड अस इज प्योर वो सेकंड है फर्स्ट और तो वो आपका सेकंड हो गया ना यहाँ पे. इट इज कंप्लीटेड. मैटर अराउंड अस, मैटर अराउंड अस हियर ये वाला हो चुका है ना यहाँ पे. then ये we have to complete this one, this we are doing. इतने ही है ना, only 4 topics हैं. then it's only one I have to complete. अगर ये वाला it will come ओमकार एंड पार्ट में काम गांधी माइट का which will come. That will be written right hand over this one. बारिश हो गई है. चलो आपके हमने कहाँ तक पूरा किया था? I think video for we have completed. Then Boers का just आपके presence में I think for Boers we have just touched that part. पूरा कुछ किया नहीं था. लिखते हैं ना? गलत नोट भाई गलत नोट लिखना है. Very good. कुछ नहीं लिखा मैं इतना भी कुछ नहीं है क्योंकि I have started with the valency part of this topic. That's why I'm asking. Last time we have made that table. अगर टिक वगैरह कुछ किया है तो पेज नंबर 58 एंड 59. वो ये मॉडल हो गया ना और फिर न्यूट्रॉन से बॉस है. अच्छा, दिस पार्ट वी हैव नॉट. अच्छा तो अभी गलत पर ये हो गया है कौन सा वाला? वैलेंसी वाला ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. हाँ अच्छा दिस विल बी हैव कंप्लीटेड एंड दिस टेबल कंपैरिजन इज लेफ्ट एंड इक्वालिटी इज लेफ्ट. ये वाला टेबल नहीं हो गया ना. एक बार ये कंपैरिजन में दिस इज सिंपल. प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन फंडामेंटल पार्टिकल्स विद द रिलेटिव मास. यहाँ पे रिलेटिव MAR लिखा हुआ है ना वहाँ पे. रिलेटिव mass to उसको and relative charge. So you are aware what are the charges and what are the position in the atom. So that is only given. So we have to start with Boers and valency. ये दो पार्ट पूरे करते हैं. जितना आपको लिखना पड़ेगा. Boers and valence. Do you remember what was the drawback of Rutherford atomic model? एक से खतरनाक सा था. On that point we have little bit we had debate there कि ऐसा नहीं वैसा नहीं. But it is one of the drawback of Rutherford atomic. बुक में मिलेगा उसमें मत हो. दूसरा बुक आप लेकर आए तो आपको मिलेगा उसमें. सेम बुक है तो मिल जाएगा. याद है कुछ नहीं. Rutherford मॉडल क्या था? आटम का था वो. which atom, which gold atom was used? मैं नहीं बताती यार. The gold thin gold foil was used, which is having thousands of atoms, right? And which particles are bombarded on that thin gold foil? पार्टिकल उसको किसी से मारा था ना जोर से. कुछ H से नाम है. हाँ H से नाम है. बराबर H से नाम है उसका.
helium particles, alpha particles which are positively charged. Okay, उसके बाद में आपको याद रहेगा मैंने ये ऐसा वाला पिक्चर बनाया था, one line here source of this one radioactive material, here many circles I have made. Then we have made one observation was like this, many particles they pass, few are deflected by some angle, this angle may be as a greater than, less than, and very few were bounce back. Okay, ये उसका observation था. Depending on that observation, he made that atomic model का character he gave that in an atom, nucleus is present in the center which is positively charged. Then there is a orbit in which electron is moving. Electron carry negative charge. It is associated with the energy. So this electron it is moving around the nucleus. ये उन्होंने क्या किया था, point बनाया था. But again one drawback was there. Do you remember that drawback? अब मैंने ये भी बता दिया ड्रॉबैक एक था. देखो I am repeating energy is associated with the electron and electron is moving around the nucleus. So what was the drawback? उसमें से दो ही वो आ सकते हैं. तो पॉजिटिव नेगेटिव का दो ही कौन आ सकते हैं? अच्छा वो दिस इज द नेक्स्ट पार्ट. यू आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसका ड्रॉबैक के बारे में बता दें. अच्छा चलो एनीवेज उधर दिमाग मत खत्म कर. आज यहाँ पे देखिए ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन हो गया. कंक्लूजन आफ्टर दैट एवरी टाइम व्हेनेवर न्यू थ्योरी इज देयर है ना, आपको लास्ट पॉइंट हमेशा यही मिलेगा, ड्रॉबैक्स और लिमिटेशन. ये आपको हर थ्योरी में यू विल फाइंड this limitation or drawback. Okay, now according to Rutherford, when this electron is moving in the orbit, what energy of this electron, it goes on decrease. Are you agree with this point? Okay, हमारा भी तो सुबह से लेकर शाम तक एनर्जी कम होता रहता है. But along with the decrease in the energy, whatever the size of the orbit is there, it will also decrease. ऐसा धीरे धीरे भी decrease in the energy, the size of the orbit will decrease, and ultimately this electron will fall on the nucleus. तो फिर positive. Let me complete it. This electron will fall on the according to the drawback. I am saying, मैं मेरा नहीं हो रही, हमारा discussion हम लोग कर लेंगे. This electron will fall on the nucleus and this complete atom, ये जो पूरा atom है ना, this atom will collapse. Okay, this atom will collapse. But actually यही वाले point पे हमने discuss किया था, अगर atom collapse हो रहा है तो we have so many things around us, so many matter around us. Can they exist? कोलैप्स नहीं. मतलब अगर एटम कोलैप्स हो रहा है, एटम एग्जिस्ट ही नहीं करने वाला, तो ये सब मैटर एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं. दो ही ऑप्शन है, यस और नहीं करेगा. तो अगर नहीं करेगा तो जो उन्होंने थ्योरी दिया है उसका, वो तो उनका थ्योरी कहीं ना कहीं इट इज रॉन्ग, राइट ना? When you are saying, when he said that the electron is moving around the nucleus and at typical point it will come down and the atom will collapse. So this theory is somewhere wrong. अभी बताओ आप क्या बोल रहे थे? वो जो electron collapse, हाँ collapse हो गया तो उसके outer parts क्या रहेंगे? K में वो तो शेल है उसकी. वो उसके बाद वाली theory. देखो we have started with the discussion with the Dalton. Right? Dalton से we have started. जब मैंने लेसन स्टार्ट किया था, we started from Dalton atomic model, वो मैजिक वाला एक्सपेरिमेंट है डाल्टन वाला. After that we discuss about J.J. Thomson model. वाटरमेलन वाला, हाँ वो वाला मॉडल. After that we have done Rutherford atomic model. ये वाला this complete it is a Rutherford atomic model. This thing we have done. Okay. Now considering the drawback given by Rutherford, next scientist he worked on that particular part. ये इसमें drawback है. next part scientist उन्होंने वो that atom collapse. हाँ ये उन्होंने ये वाला ही, मतलब यहाँ पे ही, मतलब नेक्स्ट साइंटिस्ट है नील पूर, he got to know that this is a part in the nucleus which carry positive charge. Electrons are there, they are moving. Electrons are moving but they are not falling on the nucleus. ये चीज रॉन्ग है. तो जो रॉन्ग चीज है ना उस पे काम करेंगे तो इम्प्रूवमेंट होता है rather than going for the correct things.
बराबर है ना. अगर टेस्ट में हमको अगर मार्क्स कट होता है, यू ऑल्सो व्हेन यू विल गेट योर पेपर, फर्स्ट यू विल फाइंड वेयर यू मेड मिस्टेक in order to improve in the next exam, right ना. instead of going for the correct, अरे मेरा राइट गया ऐसे करके हम नहीं नाचेंगे. हमको क्या करना है, if really we want to do improvement, we will first check the wrong where we made mistake so that we can improve in the next thing ना. same like that, Bose ने क्या किया, he took this drawback वाला point, okay, and he worked on that point saying that electrons are moving around the nucleus, वो तो सब correct है, but randomly with decrease in the energy, this complete diameter, it will not go on decreasing. It will not go on decreasing. Instead of that, he modified this model saying that nucleus is present in the center. ये तो correct है, which carries positive charge. Everything is correct. But electron, they will move in some specific orbits. They will move in some specific orbit. These are the energy levels. Okay, so this energy levels can be represented by K, L, M and N. ये तो आपने already study करके रखा है. So these orbits, they are nothing but energy level and they can be represented by this three alphabet. Okay, when I am saying energy level, तो इसके लिए symbol है small n. This is capital N, this is small n. So you will not get confused. Okay, K तो हम capital लिख रहे हैं, तो this all alphabet are capital, this N is small. This is a energy level. Now energy level square. हाँ नहीं, counting कहाँ से करना है हमको? From where does it start? From the inner. K से start होगा, तो this will be 1. 2 है ना K का 1 बेटा. Nucleus, after nucleus the first one. इस वो 2 होल्ड कर सकता है. वो मैं बता के उधर भी जाती हूँ. हाँ पहले इतना तो पूरा कर लेते हैं ना. After nucleus, this is the first one. Okay, so 1, then L is second, M is third, and N is fourth. This much part it is clear. So first orbit, second orbit, third orbit, fourth orbit. K1, L2, M3, and 4. Now the last part. It is number of electron which can be calculated by using this one. 2n square. आपके बुक में भी राइट साइड में देखो वो पॉइंट है. In small paragraph that point is given. मिला? हाँ underline. राइट में है या लेफ्ट में है? Where it is? Left side. Okay. आपके with reference to you. हाँ. So you have 2n square. नेक्स्ट टाइम है ना अपना बुक बैग में डाल के रखना. हाँ. और अभी पॉइंट करके रखो till which part we are completing. I don't think we will go for the last part because the students are also absent. So in next class we will complete this topic. 2n square. Okay. Now 2n square ये formula है. This is standard formula. This formula will remain as it is even you go for the masters in chemistry also. ये फॉर्मूला में कोई जैसे ये वाला शेल्स दे आर फिक्स एंड वैल्यू इज फिक्स. दिस फॉर्मूला इज फिक्स. ये चेंज नहीं होता. नाउ करना क्या है, जस्ट वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ n. आफ्टर पुटिंग वैल्यू यू विल गेट हियर 2, 8, 18 एंड 32. हाँ करके देख लो कैलकुलेशन. यू कैन डू इट. Okay, so these are the number of electron which can be placed in this orbit. Now I have written here 2. When we are playing game on mobile, for example, that games contain 1000 steps, 1000 level. So with skipping any one level, for example, I skip level number 5, then can I reach to 6 step? Next में नहीं जा सकते, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे 6 में जाना है तो 5 क्रॉस करना पड़ेगा. 5 I have to qualify. राइट ना. जो भी कुछ रहेगा, कितने पॉइंट्स रहेंगे, फ्रूट ब्लास्ट खेल रही हूँ, जो भी कुछ गेम खेल रही हूँ है ना, तो वो वाला जो लेवल है उसका स्कोर जो है वो मुझे आई हैव टू क्रॉस दैट स्कोर, देन ओनली आई विल गो ऑन नेक्स्ट लेवल ना. सेम लाइक दैट. नाउ समटाइम इट्स हैपन इन सम गेम्स. अभी जो फ्रूट ब्लास्ट का मैं गेम बोल रही हूँ, इट मे हैपन फॉर एग्जांपल यू आर क्रॉसिंग दिस लेवल, आई हैव टू स्कोर 500. Okay, but if I score 482, then can I get this level? नहीं. तो I have to cross this thing. Minimum तो इसका मैं जितना खेलूंगी 1 से स्टार्ट हो जाएगा. Minimum is this one, maximum will be this one. If I cross this, then only I will go to next level.
बराबर है ना। तो सेम लाइक दैट, अभी मैंने गेम का एग्जांपल लेके इसलिए बोला क्योंकि ये पार्ट जल्दी समझ में आता है। एंड इन माय 3 क्लासेस इन डिफरेंट सेंटर्स आई सॉ मैक्सिमम स्टूडेंट दे फेस द सेम प्रॉब्लम कि भाई इसका मतलब क्या होता है। नाउ दिस इज 2 हियर, okay, this is what this k orbital, it is having maximum capacity of only 2 electrons. कितना होल्ड करेगा इलेक्ट्रॉन? 2। दिस इज अ मैक्सिमम काउंट। हाँ, ये मैं थोड़ा इरेज करती हूँ मैक्सिमम मिनिमम लिखने के लिए। Here minimum and here maximum. Okay, so maximum how many electrons can be stored? Sorry, देखो गेम की भाषा निकल रही है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस k कैन होल्ड इज 2 एंड मिनिमम 1, क्योंकि जीरो एटॉमिक नंबर वाला हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है, बराबर ना, जिसका एटॉमिक नंबर 0 है। इवन हाइड्रोजन इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1, पता ही है ना आपको। तो यह मिनिमम काउंट इज 1। तो गेम में से प्लीज मुझे भी अभी बाहर निकलना पड़ेगा थोड़ा। Altogether, I have attended 2 classes in my school. 2 classes means 2 divisions. 12th standard, 3 divisions. Okay. And in a UP, 9th standard CBSE, और उन्होंने भी मुझे 10th standard ICSE का दिया from last. Thing is that this syllabus you are having in class 9 CBSE में, okay, few part of this one it is as it is in class 10, like CBSE और जो ICSE का है ना उनका 2 वॉल्यूम में बुक्स है, एक बुक इससे ज़्यादा थिकनेस है। और हमारे पास में फॉर CBSE we have NCERT textbook, it is not same with ICSE, they are using different publication textbooks। तो वो चीजें ना एकदम कॉम्प्लिकेटेड होती, तो मुझे कभी कभी सोचना पड़ता है यार मैं कौन से क्लास में खड़ी हूँ, मुझे क्या पढ़ाना है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर कनेक्टेड ना। फॉर एग्जांपल इफ आई स्टार्ट विद द वैलेंसी आई विल गिव यू एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड so there नहीं, I will go for that and I have to go for that also। एग्जांपल मुझे देना पड़ेगा कि ये ऐसी चीज क्यों है, इन बिटवीन आई हैव टू शो यू पीरियोडिक टेबल आल्सो। तो कभी-कभी एकदम सब झंझट हो जाता है दिमाग के अंदर। एनीवेज चलो गेम स्कोर आएगा तो मुझे बता देना, इट इज नॉट स्कोर, इट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, सो हियर k it is our first orbit, minimum capacity is 1। अच्छा ये चीज याद रखना, we don't have any element with atomic number 0। This is 2n square, it is a number of electron right now, so we are just placing, we are just showing the number of electron minimum and maximum। So here if the atomic number is 1, you can directly put that 1 electron here। Okay, now second one, if you are having atomic number 2, तो आप कहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्लेस करोगे? फर्स्ट में। क्यों फर्स्ट में? फर्स्ट में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तीसरा नहीं आ सकता। जैसे मैंने आपको यहाँ पे गेम में बताया है 488 अगर स्कोर हो रहा है then we are not crossing that level, we have to make score of 500 only। 500 का स्कोर होगा, 501 भी मिलेगा then we will cross that level। 5 से we will go for 6-1। same like that यहाँ का जो कैपेसिटी 2 का है it should be satisfied first, then only the next electron it will go to the next orbit। okay, so 1 we have seen, 1 रहेगा तो यहाँ पे आ जाएगा, 2 electrons रहेगा, again the second electron will enter here। but if you are having element with atomic number 3, okay, then how you will distribute those 3 electrons? First 2 in K, and the 1 it will go in L। K के बाद में नेक्स्ट इज सबका मिनिमम 1 है। हाँ, सबका मिनिमम, सबका मिनिमम इज 1, सबका, हाँ, K एलिमेंट सबका मिनिमम इज 1, मैक्सिमम इज जितना उधर दिया है कैपेसिटी दैट विल बी मैक्सिमम का। नाउ वन थिंग, इफ यू आर हैविंग दिस पर्टिकुलर शेल कंप्लीटली फिल्ड विद 2 इलेक्ट्रॉन, ओके, K वाला ऑर्बिट है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, then that particular atom it is stable atom, it will not
further undergo any change, any reaction. It will not take part in the reaction. Why? Because it contains 2 electron, it is satisfied and it is having stability. समझ में आया? लेकिन अगर उसके पास में 1 है तो थोड़ा गड़बड़ उसके पेट में हो जाएगा ना. अगर 2 है में ही आ जाएगा ना. उसके पास में 2, इट इज अ मैक्सिमम कैपेसिटी. ओके, 2 रहेगा तो इट इज स्टेबल. It is stable. That particular atom, it is stable. It will further not take part in any chemical reaction. क्योंकि जब chemical reaction में part ले रहा है वो, okay, any chemical reaction at that moment, that particular atom either it has to transfer electron or share the electron with other atom. 2 possibilities are there. Either transfer electron, transfer or share the electron pair. This is for chemical reactivity. ये काम करना पड़ेगा. Now, if it contain 2 electron हमारे पास, हमारा कैपेसिटी कितना है 2 इलेक्ट्रॉन का. इसके पास में है कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन. So it is stable. Why it will take part in any of this chemical activity? दोनों में से क्या होता है, ट्रांसफर या शेयर? क्या? और ट्रांसफर और शेयर. मेजरली क्या होता है? डिपेंड्स किसके साथ में उसको रखा है. ट्रांसफर में आपको आयोनिक बॉन्ड मिलेगा, शेयरिंग में आपको कोवेलेंट बॉन्ड मिलेगा. ड्रिंक वाटर इफ यू हैव. नारे जोर से. वो कल लेट से हुई थी. एग्जाम अभी हो गया रहेगा ना? हाँ. अच्छा, गाँव में गए थे? बर्थडे पार्टी. नहीं, आपका स्लीप पैटर्न को डिस्टर्ब मत करना. हाँ, दिस विल इफेक्ट योर हेल्थ. वो हमको इमीडिएटली समझ में नहीं आता, बट स्लोली है ना हमारे लाइफ पे बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है. ब्रेन अगर सही नहीं रहा तो ब्रेन का रेस्ट पूरा होना चाहिए. मिनिमम इज 1, मैक्सिमम इज 2. फॉर एग्जांपल, इफ helium atomic number is 2, so 2 electrons are entering that. हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2. ओके, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास में है. दिस इज स्टेबल. केमिकली दिस इज स्टेबल. स्टेबल मींस व्हाट इन केमिकल टर्म्स? इन केमिकल टर्म्स इट विल अंडरगो एनी रिएक्शन? नो. रिएक्शन में जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? आइदर देयर इज ट्रांसफर और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो दिस विल नॉट हैपन इन केस ऑफ हीलियम. कोलाइड ऐसा कुछ नहीं हो सकता? क्या कोलाइड और क्यों? मतलब वो एक दूसरे से टकरा जाएंगे और कुछ अलग फॉर्म हो जाएगा? वैसे कुछ नहीं होने वाला. क्योंकि अगर वो कोलाइड भी होगा तो किसके साथ होगा कोलाइड? फॉर एग्जांपल मैंने ये हेलियम लिया है, 1 हेलियम प्लस आई हैव टेकन अनदर हेलियम कोलिजन के लिए. नाउ दिस कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन, दिस कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन. सो व्हाई दे विल फॉर्म बॉन्ड बाय एनी ऑफ दिस मेथड? जरूरत नहीं है. अगर आप हेलियम के साथ में इफ यू आर ट्राइंग Na का एटॉमिक नंबर इज 11, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इज 2, 8 and 1. नाउ दिस कंटेन, हाँ अच्छा वैसे वो, हाँ वैसे वो ये वाले पैटर्न में इट इज 2, 8 and 1. ओके, नाउ इट इज कंप्लीटली फिल्ड. इट कंटेन 1 इलेक्ट्रॉन. सो वेदर एनी चांस टू हैव 7 इलेक्ट्रॉन फॉर सोडियम? कहाँ से आएगा? राइट, कहाँ से आएगा? क्योंकि जिसके साथ में हम उसको ज्वाइन करने का सोच रहे हैं ये तो पहले से खुश है विद 2 इलेक्ट्रॉन. अंडरस्टूड? समझ में आया? तो दिस विल, हेलियम विल नॉट एट ऑल टेक पार्ट केमिकल रिएक्शन इन एनी ऑफ द केमिकल रिएक्शन, बट सोडियम इट विल फर्दर अंडरगो चेंजेस. ये तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिया एग्जांपल. समझा आपको डिफरेंस? ओके, तो here minimum it is 1 and maximum is 2. Now this particular state containing 2 electron, chemically this state it is known as duplet state. Duplet state. दो अगर इलेक्ट्रॉन है, that state it is duplet state. Moving to the next one. Now in next again the maximum capacity is 8. Okay, minimum is 1. Maximum will be
8. ओके, अब यहाँ पे मिनिमम मैं 1 लिख रही हूँ, मिनिमम 1 लिख रही हूँ, इसका मतलब क्या कि दिस इज कंप्लीटली फिल्ड विथ 2 इलेक्ट्रॉन, हो गया इसका फिलिंग. नाउ वी विल नॉट फोकस, इसका पूरा हो गया, दैट्स व्हाई वी हैव ट्रांसफर्ड 1 इलेक्ट्रॉन. बराबर ना. तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा? फॉर एग्जांपल लिथियम, लिथियम इट इज 3Li. ओके, लिथियम का सिंबल एटॉमिक नंबर 3, 2 and 1, मतलब K में 3 और यहाँ पे L में 1. ओके, K जब कंप्लीटली फिल होगा देन ओनली वी विल गो फॉर L. जब L कंप्लीट फिल होगा देन वी विल गो फॉर M. M जब कंप्लीट होगा देन N. वो सीक्वेंस हमको फॉलो करना है. कोई ऐसा पार्टिकल या हीलियम ऐसा कुछ है जिसमें ये सब का एडिशन है 2 + 8 + 18 + 17? 2 + 8 + 18 प्लस एडिशन सम, मतलब एटॉमिक नंबर आपको चाहिए जिसमें दिस एडिशन विल बी रिफ्लेक्टेड. यही आप पूछ रहे हो ना. तो ऐसे एटॉमिक नंबर आपको हायर वाला नहीं दिया, व्हाटएवर टेबल इज गिवन इन योर बुक ना, टर्न करो वो पेज में, वन स्मॉल टेबल इज गिवन. टोटल 20 elements are there and that many 20 elements you have to learn. See, you can check the electronic configuration also. atomic number 20. सोडियम देखो, how much it is? Na. बिला कितना है? 11. बराबर मैंने लिखा है. इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन चेक करो, it is 281 KLMN. मिला? 281. राइट, अंडरस्टूड. लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन दिख रहा है हमको? 1. लास्ट. हाँ, लास्ट शेल में how many electrons are there? Only 1. First shell K contain 2, L contain 8. So sodium पर मैं बोलूँ, हाँ, K contain 2, L contain 8 and L contain 1. Okay, अभी यहाँ पे 1 आपको दिखाई दिया, तो 1 पकड़ के you go down, वैसे नीचे जाओ. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. ओके, 8 किसका है देखो? 8 तीन का है. किसका है? आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम. नहीं, मुझे सिर्फ वो जिसमें लास्ट में 8 है मुझे वो. कैल्शियम. नो, इट इज आर्गन. देखो 2, 8 and 8 बराबर है. तो रट्टा मारना पड़ेगा. नहीं, नॉट सो डिफिकल्ट, मानोगे तो भी चलेगा. It is up to you. Few elements are very important and this 20 elements in that set important वाला. Okay, अभी देखो argon का it is 2, 8 and 8. Atomic number is 18. If you go for the last one calcium वाला में 2, 8, 8 and at end it is 2. देखो अभी calcium last है. हाँ, कैसे मतलब 2 पहले में 8 दूसरे में और फिर ये 10 होगा ना. 10 होना चाहिए, वो 10 नहीं किया है, वो 8 दिखा रहा है और लास्ट में फिर से 2 दिख रहा है. राइट, हाँ, वो ऐसे नहीं समझ में आएगा ना, तो मैंने बोला तुम लोगों को प्रॉब्लम वहां पे आती है. ये वाला L का पूरा करते हैं. हाँ, K का समझ में आया ना. जब K पूरा फिल होगा 2 से, तो जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर रहेगा विद एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, दैट इलेक्ट्रॉन यू कैन पुट इन L. Here again in L minimum count is 1. It will start with 1 and it will end at 8. Maximum 8 electron. So once this is completely filled, the next electron it will go to K. L के बाद में next one है M. M कहाँ चला गया हमारा? सोडियम. देखो वहाँ पे सोडियम 11, सोडियम 2, 8 and 1. Check करो, it is 2, 8 and 1. This electron it is entering in L. Okay, now here for L, sorry M आएगा ना, K 2 L 8 and M. M के अंदर इसका 1 इलेक्ट्रॉन बराबर है ना. Now here minimum capacity is minimum 1. Maximum कितना आएगा? 18 होगा. But वहाँ पे है but is that to have 18 electron, is it possible for this one? Sodium 18 इलेक्ट्रॉन नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है उसके अंदर, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर इज 11.
Okay. Now, atomic number is 11. 18 is not possible. But here the second last shell. Second last shell, it contain 8 electron. तो फिर वो स्टेबल हो रहा है. अब ये इलेक्ट्रॉन का क्या किया जा सकता है? ये इलेक्ट्रॉन का क्या किया जा सकता है? This particular electron, it will take part in chemical reaction. समझ में आ गया? इसीलिए अभी ये 9 में से एक निकालना, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इज नॉट इजी. 9 में से फॉर हमारे assumption के हिसाब से as per this we can write in this way also ना. But we have not written. This is wrong method of writing. In case if you are writing in this way, to take one electron out from the 9 is not easy. But instead of that, for stability factor, if you consider that factor and write in an octet state and the atom which are containing 8 electron in the outermost shell, they are also stable. So once non-stable है. कौन सा? 1. Which one? M में 1. M में 1. Right. This one. ये ऐसा ये सोडियम एटम है जिसका दिस इज अ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. If sodium is taking part in the chemical reaction, this electron is lost. This electron is lost in the form of transfer of electron, give and take wala. NaCl is an example of that type. And the electron, and electronic configuration will become 2 and 8. इतना ही बचेगा. ये 1 है, ये लॉस हो जाएगा. तो फिर लिखना है हमें 1. लिखना है ना. जो एटॉमिक नंबर दिया है उसका इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको 1 तो चला जाएगा. तो जाने देना. तो अपन क्यों टेंशन लेने का? हमको जो नंबर दिया है वी हैव रिटन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. वो जा रहा है किसके पास जा रहा है? वेदर इट इज गोइंग फॉर क्लोरीन टू फॉर्म NaCl और टू एनी अदर एटम, वी डोंट हैव टू केयर. हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा? राइट इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन. यू विल ओनली राइट द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन. मतलब K2 N1 वो वाला ही आप लिखोगे. उसके अलावा आप कुछ नहीं लिखोगे. अभी क्या करना है आपको? टेक वन पेज ऑफ योर बुक, पूरा वाला पेज ले लो और इन दैट पेज यू हैव टू मेक टेबल. आपको यस जगह नहीं बड़ा. बड़ा है 20 एलिमेंट्स है. देखो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम टिक मारो उधर. फर्स्ट कॉलम got name of the element, second symbol, third atomic number. Okay, ये चीजें you will copy directly from your book because you don't know the elements and the atomic number. On right side, electrons, distribution of electrons in different shells. लिखना पड़ेगा. तो समझ नहीं अब करो, आपको समझ में आएगा. Electronic distribution of electron, this you have to write without looking, and valency we will discuss in that. चलो करो फटाफट. अच्छे से टेबल बना लो. Write down elements, then symbols, and 1 to 20 they are serially arranged. तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा उसमें. कि मैंने वो आपको लिख के खुद करना है, वो कॉपी मत करो. क्यों? मतलब वो खुद करना है आपको. समझ में आया? ये 1 2 3. हाँ. Electronic distribution, first make these 3 columns, and electronic distribution you will write by your own. ज़्यादा ही होगा. हाँ रहने दे. चुप अभी लास्ट वीक में भी नहीं आई थी ना, इसीलिए. Elements, then symbols, then atomic number, and then distribution of shells,
distribution of electrons in K, L, M and N. The last column is valency. पीरियोडिक टेबल कब आएगा? आप पहले अपना काम पूरा करो। आया पीरियोडिक टेबल, कब आएगा? आगे आ गया ना? शेल्स अच्छे से बना लो के एलिमेंट एंड लास्ट कॉलम फॉर वैलेंस। हो गया 20? लास्ट सेक्शन चलो वो तुम्हारा बुक जरा बंद करके साइड में रखो। ये वो खुद देख, ये मुझे याद नहीं है। हाँ तो तुझे खुद देखने आ जाएगा। आई विल कम 1 2 3 4 5 6 7 एक दो पर मैं तो नहीं ना मैंने भी क्या करेंगे। ये अच्छे से यहाँ से अच्छे एटॉमिक नंबर है ना, देखो सीरियली है 1 to 20। चलो अब यहाँ पे के एलिमेंट लिखो ऊपर यहाँ से स्टार्ट करके फिर जगह नहीं जाना होगा। के ऊपर के लिखो एल एम एन ओके लास्ट विल बी फॉर वैलेंस। यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1 ओके सेकंड 2 देन करो। यहाँ पे 8 कर दिया, 1 आएगा। नहीं हो गया ना। अभी ये दिस लेवल यू हैव क्रॉस्ड। चलो 500 स्कोर कर लिया अभी आपने। नेक्स्ट अंडरस्टूड। एलिमेंट्स अगर एटॉमिक नंबर if they are giving now then there is no problem, but if they are not giving then you have to learn atomic numbers. It's for 20 not so difficult. मैंने क्या बोला, अगर एलिमेंट्स दे रहे हैं ना with atomic number then you can write this. If they are only giving only the element ना they will let you know ना कि देने वाले भी है कि नहीं, तो फिर आपको ये लर्न करना पड़ेगा। इस 20 अभी से चार्ट बना के रख लो इसमें। ओके अभी यहाँ पे ये हो गया। बी केयरफुल व्हाइल फीलिंग इलेक्ट्रॉन। देखो देखो व्हाट यू डिड, सी व्हाट यू डिड। इट इज 9, इट इज नॉट सिमिलर टू सोडियम। नहीं इसकी कैपेसिटी 90 है ना। हाँ और उसकी 8 है। तो मैंने क्या बोला था One फॉर destroy सोडियम में? जाएगा। हाँ मैंने सोडियम के लिए क्या बोला था? सोडियम तो 1 उड़ जाएगा, चला जाएगा। तो नियम की भाषा में इट विल टू से इट इज लाइक 9 चला जाएगा। but make this 8 and
tier 1. Understood? So 10, 18 and 190. Why we did like this? Because in case this potential is taking part in the chemical reaction, this one electron is removed. And 2, 8, 8, it will be a stable electronic configuration with potential. समझ में आया? तो ये चला जाएगा तो इस पर कोई चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ऐसे ये नेक्स्ट पार्ट जो आपके सिलेबस में लिखी है। नेक्स्ट करें। हाँ, फिर से वही काम करेंगे। अच्छा तो 8 हाँ, मिनिमम 1, मैक्सिमम आपको पता है ना मैक्सिमम कितना है वो? फॉर दिस 32 है। हाँ, तो मिनिमम इज दिस वन। मैक्सिमम तो जो नंबर है वो नंबर आ जाएगा उसमें। यहाँ पे मैक्सिमम रीच करना इट इज पॉसिबल टू हैव 18 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा मतलब वो तो ऐसा नहीं है कि हम भी किसी पर फिर ये डिस्ट्रॉय नहीं होता। डिस्ट्रॉय नहीं होता। It is taking part in the chemical reaction. Or taking part in the chemical reaction means it will undergo either ionic bond और तुमने टाइप ऑफ रिएक्शन किया ना, कॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, थर्मल डिकम्पोजिशन, बहुत सारे किए। वो टाइप ऑफ रिएक्शन होती है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एटम में से व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन इट विल बी रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स, हाँ, गिव एंड टेक। बैंक से लोन निकालने का बैंक विल टेक इंटरेस्ट ना, whether you return in 2 days or 20 years, अमाउंट उनका फिक्स रहेगा। एंड विद चेंज इन गवर्नमेंट देयर विल बी चेंज इन दैट प्लान आल्सो। ये सरकार आई है 5% बढ़ाओ, दूसरा सरकार आई है वो कुछ और करेंगे, देयर उधर कुछ भी स्कीम दिखाएंगे, दे विल इंक्रीज 1 more %। इट इज लाइक दैट। समझ चलो, ये सरकार वर्ग का नाटक छोड़ दे, अभी हम यहाँ पे वर्क करेंगे। ओके, सोडियम I have shown चलिए हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल है। फाइंड वेयर इज हाइड्रोजन? टॉप कौन सा साइड अकॉर्डिंग टू योर लाइट और लेफ्ट टॉप राइट विद एटॉमिक नंबर 1 दैट नंबर इज विजिबल। ओके, दिख रहा है ना? तो कलर याद करना पड़ेगा? नॉट नेसेसरी, वो अच्छा दिखने के लिए कलर्स, वो कलर याद करने की जरूरत। कलर तो नहीं, नॉर्मल टेबल ही बनाए और आगे देखोगे ना फॉर लर्निंग डिफरेंट ट्रिक्स आर देयर, डिफरेंट सॉन्ग्स आर देयर एंड इवन समवेयर फूड आइटम्स आर प्लेस्ड। बहुत कुछ मिलता है उसके ऊपर, तो वो तो इट इज अप टू यू हाउ यू आर लर्निंग। यहाँ पे ओके, अभी देखो सो हाइड्रोजन 1 ओके, एंड देयर इट इज इन ग्रुप नंबर 1। वो वाले कॉलम के ऊपर ग्रुप यू कैन सी एट द टॉप, ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1 का एक्चुअली व्हाट इज मीनिंग ऑफ दैट? outermost shell contain 1 electron. So elements which contain 1 electron in the outermost shell, they are placed in group number 1. You will get example from here also. मैंने क्या बोला? Elements containing 1 electron in the outermost shell, where they are placed in group number 1. Okay, 1 में अगर उसके अंदर इलेक्ट्रॉन 3 है आउटर मोस्ट शेल में, नहीं, अगर एटम के आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, देन इन व्हिच ग्रुप दे विल बी प्लेस्ड? 5 है। 3। अरे मतलब के 2 और फिर आउटर में 3 ना, वैसे ना? नहीं, के एल एम एन ये 4 हमारे ऑर्बिट्स हो गए। व्हिच इज द लास्ट वन आउटर मोस्ट ऑर्बिट? एन। अगर n तक हमने इलेक्ट्रॉन भरे हैं तो हाँ, यहाँ पे हमने कहाँ तक इलेक्ट्रॉन भरे हैं? only k, this means our remaining they are not existing. Here we have filled, for lithium we have filled till k, these orbitals are not existing. Okay, in case of this one sodium we have filled in k l m n. So which is the outermost shell? n. समझ में आया? यहाँ पे देखो के एल एम एन, कौन सा आउटर मोस्ट है? एन। अच्छा है ना गेम? ये ऊपर वाला सा क्या होगा इधर 1 का? वो तो केमिकल रिएक्शन तो एन होगा, तो ये उसमें ही है ना, स्टिल इट इज देयर के एल एम एन। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो वेयर इट शुड बी प्लेस्ड?
कहाँ होना चाहिए? एक अरे सही में कौन से ग्रुप में होना चाहिए? नहीं उधर देख मत यू टेल मी कौन से ग्रुप में आना चाहिए इसको? अभी तो हमने हाइड्रोजन देखा ना मार्क आईडी. अभी just we have checked hydrogen atom right is present in which group? It contains one electron in the outermost shell. It is present in which group? ग्रुप वन ये सब आपने शेल्स देखे. हाँ ये सब आपने ऑर्बिट देखे. I am showing you with respect to periodic. Okay, periodic table में you can see group from 1 to 8. दिख रहे हैं? समझ में आया? यहाँ का हम रेफरेंस लेके we are applying there. अगर लास्ट शेल में हमारे पास में 1 इलेक्ट्रॉन है तो ये वाला आएगा. It is located where in the periodic table, in which group it is located first. Understood? In case of sodium, again there is one atom, one electron in the outermost shell. So where it is located? Check करो. Where it is कैल्शियम कौन सा ग्रुप है वो? ऊपर देखो ग्रुप कौन सा है वो? 2 में डाल दिया सोडियम Na. एक सेकंड फर्स्ट में ही है दिखा? कितने इलेक्ट्रॉन्स है सोडियम के आउटरमोस्ट शेल में? चेक तो करो. मतलब अगर यहाँ पर 7 है तो फिर ये कौन है वो? 7 है. कौन है वो? क्लोरीन. क्लोरीन है. देखो वो कहाँ पर है क्लोरीन? देखो उधर है ही नहीं है ना मुझे तो दिख गया. 17 फ्लोरीन क्लोरीन दिखा? अरे वो तो 7 में होना चाहिए तब तो हाँ 17 में है पर हाँ उसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स आर 17 और 17 में से जो लास्ट के 7 इलेक्ट्रॉन है दे आर इन व्हिच ऑर्बिट? क्योंकि ये वाला हम ऐसे अगर बोल भी रहे हैं अकॉर्डिंग टू द ऑर्बिट वेयर इट इज प्रेजेंट बट number of electron is big enough. We are not placed in the 7th group. And the number of electrons. Because this table it is based on the atomic number of the element in the increasing order of the atomic. Understood? देखो 1, 2, 3, 4 ऐसे हमको numbers दिए हैं. But if you go from right to left, sorry, left to atomic number. Total atomic number. If you go from left to right, it is increasing. Increasing. चेक करो. अच्छा लगा? नहीं बाय. एक क्या करूंगी मैं इन सब का पढ़े हो तो पढ़ना तो पड़ेगा ना. क्यों आपको साइड चेंज करना है? हाँ we will go for commerce, arts, law. My God. So you are preparing right from now. नहीं वगैरह entrance देना पड़ता है क्योंकि interest in that career counseling they suggested me that in 10th I take arts and then 10 minutes. It is 11. oh sorry 11th में I take arts and then along with that I prepare for SAT and CLAT too law examination. अभी मैं I give you one suggestion. You are going for law group. You can do. But again in law there is one subject which is related to science. Calculation will be करना है. It is related with biochemical changes. देखो अगर इनमें ये है तो इसमें खूब वाले नहीं आता. Environmental changes. oh Different laws are there related to the environment. तो आप arts में जाके you will study, no doubt in that. But अगर आप science, even if you score less marks ना, तो ज़्यादा issue नहीं है. On one more thing, उसके अंदर maths भी है, हाँ? हाँ, तो I will suggest you instead of going taking admission for arts ना, you take admission in science. No issue if you score less marks in class 12. But side by side you will do law का थोड़ा बहुत entrance का preparation ना. So anyways it is up to you for ये science नहीं it is not. तुमको क्या करना है? You don't have to score 90 यार. CBSE में normally students are getting good percent. अब वो 70 तो सबका रहता है. If you are regular right from beginning. Then what is the issue? समझ में आया? Otherwise ना do one thing मैं आपको suggest करूँगी आसपास वाला कौन सा स्कूल है where you can score good marks in that. वो तो बाद में next year देखेंगे. I will suggest you. तो आपको just you take admission in integrated वाला part side by खाली कॉलेज में जाके practical attend कर लो. बुलाए हो तो लेकिन वहाँ पे regular जाना पड़ता है स्कूल में. Faculty is taking classes.
Akash वगैरह, they are taking classes. Practicals you have to attend regularly. Practical का टेंशन चला जाएगा. Side by side you do your new preparation also. अंडरस्टूड ना. अगर आप रेगुलर में लोगे तो आपको रेगुलर कॉलेज जाना पड़ेगा. इंटीग्रेटेड वाला लोगे तो आकाश या किसी के साथ में आपको कोलैबोरेशन रहता है वो अलग अलग स्कूल्स का. इट डिपेंड. लेकिन आपको करना ही नहीं है मेडिकल, दैट इज अनदर. तो रेगुलर स्कूल में चले जाओ. एनीहाउ यू हैव टू गो रेगुलर. ज्यादा पैसा भर के एसी रूम में बैठने से अच्छा तो सादी वाले क्लास में बैठ जाना. देखो ये मेरा सजेशन है, बिकॉज माय हस्बैंड रिसेंटली ही हैज कंप्लीटेड लॉ. उनको 8.5 का काउंटर मिला. और ना नहीं, उनका क्या था मालूम है, क्रिमिनल वाला था या फीमेल वाला, कुछ डोमेस्टिक वायलेंस वाला कुछ तो ऐसे ही था. क्योंकि व्हेन आई आस्क्ड फॉर द सेम थिंग ना, ही सेड नो नो एज बार हो गया अभी. बट ही हैज कंप्लीटेड रिसेंटली, ही हैज कंप्लीटेड. नाउ वी आर आस्किंग हिम टू गो फर्दर टू कंप्लीट मास्टर्स आल्सो. लेट अस सी हाउ इट्स वर्किंग. क्योंकि ही इज आल्सो लेक्चरर एंड ही इज नॉट विद अस. वो गांव में है और मैं खाली बच्चों के साथ में हूँ. यही डिफरेंस है हमारे बीच में. फुल डे हिज शेड्यूल इज कंप्लीटली पैक्ड राइट फ्रॉम मॉर्निंग टिल, और साथ में खाना बनाने का भी काम करते हैं. तो डोमेस्टिक काम करते चले हुए. ओके, ये वाला पार्ट, दिस वैलेंसी पार्ट, एंड अलोंग विद दैट 2 पॉइंट्स आर रिमेनिंग, आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स. इसी टॉपिक में है दैट वी विल कंप्लीट इन द नेक्स्ट क्लास. जो वैलेंसी वाला आई हैव नॉट स्टार्टेड. Last week also हमने ये table just we have completed. Now even you have completed this table. यहाँ पे मैं तुमको और 2-3 चीजें बता दूंगी. यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ना, हेलियम, you have written helium at second position, neon 10 and argon 80. देखो ये तुम्हारे बुक में neon 10 and argon 80. Okay. उसमें for helium outer electronic configuration is 2. Okay. For argon it is 8. Outer electronic distribution is 8, and for neon, argon, neon का 8 है और argon का भी 8 है. बराबर है ना? Now 2, 8 and 8, they are stable or not stable? Stable. They will take part in chemical reaction. जरूरत नहीं है उनका complete if they are placed in 18 group, because all these elements, these are the higher atomic number element. Outermost shell is completely free. They will not take part in the chemical reaction, and here you can have one Q reason type of question. These all are noble gases. They are chemically inert. Why? Explain. Comment on this. Understood? Why they are chemically inert? Atomic numbers. Mark tag. Outermost shell, it is completely fixed. Stable. So they are not taking part in the. जब stable है तो they will not take part in the chemical reaction. Understood the reason? देखो यहाँ पे 18 लिखा हुआ है. Sometimes they are also known as zero group element. Sometimes zero group, यहाँ पे groups लिखे हैं ना 1, 2, 3, 4 है ना, groups लिखा हुआ. तो sometimes they are called as a zero group elements also, because they are not taking part in the chemical reaction. Moving to the next one, fluorine 9. देखो आपके बुक में आपने 9 लिखा है. 2 and 7. 2 and 7. क्लोरीन भी हमने किया है 17, 2, 8 and 7. देखो वहाँ पे फ्लोरीन is 9, क्लोरीन is 70. हो गया. फॉर फ्लोरीन उधर तुमने बुक में क्या लिखा है देखो 2, 7. फॉर क्लोरीन 2, 8, 7. मिला. कितना इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है वहाँ पे? हाउ मेनी? For in fluorine and chlorine, how many more electrons are required to complete the octet state? 1. बराबर. And where they are placed? 17. Because last shell contain 7 electrons. Sum total है उसका 17, but last shell में कितने हैं? 7. 17 में डाल दिया. This all they contain 7 electrons. जितने भी है ना halogen, this family it is known as halogen family. They are in the need of only 1 electron. एक ही चाहिए. तो by nature they will be very active, very reactive, या ऐसा ढिल्ला ढल्ला रहेंगे? एक ही चाहिए ना. एक ही चाहिए तो कैसे रहेंगे? एक्टिव रहेंगे कि पैसिव रहेंगे? एक ही चाहिए तो एक के साथ केमिकल रिएक्शन हो जाएगा. तो वो बाय नेचर वो कैसे रहेंगे? जैसे कि जीरो में उनको किसी चीज का जरूरत नहीं. दे आर सेल्फ सेटिस्फाइड.
they will be very active. तो हेलोजन का जो रिएक्शन ढूंढने में चक्कर में एक्टिव रहेंगे. हाँ, एक चाहिए स्टेबिलिटी के लिए उनको जस्ट दे नीड. अगर आपको 39 मार्क्स मिले आउट ऑफ 40 तो यू विल कीप ऑन सर्चिंग वेयर माय मार्क्स इज लॉस्ट. हाफ मार्क्स भी अगर मिल रहा है तो तुम 7वें आसमान पे चले जाओगे, बिकॉज दैट हाफ विल बी कन्वर्टेड इनटू फुल मार्क्स फाइनली. Right now, same like that. Halogen, it will be in search of one electron. इसके लिए वो क्या अपने आप को keep chemically active, और chemically active मतलब it will go either covalent bond or ion. जो मैंने यहाँ पे बताया था केमिकल CR लिखा था. You asked me ना इसमें से कौन सा होगा, तो I said it is either transfer or shift. Understood? चलो, let us stop. You are having your next class now, ना? कौन सा है? Maths. समझेगा ना? Don't remain absent. If you meet them in next class or any of the class, then